मल्टीपल जगह से उसको रिक्वायरमेंट है, तो मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं क्रिएट होंगे, एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा और एक ग्लोबल पॉइंट दिया जाएगा उसको एक्सेस करने का. So we'll see why do we do that, what is the purpose of this design principle. That is to provide only single instance and a global point of access to that single instance. So now, why do we require a single turn pattern? Actually, it is important for some classes to have exactly one instance. Okay. For example, there can be many printers in a system, but there should be only one printer spooler. Okay. And there has to be only one file system and a one window manager. So similarly, a digital filter will have only one A to D converter, and an accounting system will dedicate it to serving one company. So there are many cases where it is important for some classes to exactly have one instance. Now you cannot have multiple printers हैं तो multiple printer spoolers तो हो नहीं सकते, हर printer के साथ एक spooler लगा दो. That is not a practically feasible solution, because वो तो आपका wastage of resources है. So there can be multiple printers but one printer spoolers. There could be multiple files but one file system, one window manager, okay, one A to D converter. So in all these situations we require the singleton pattern. That is, we have to ensure, what does the singleton pattern do is actually it ensures that a class has only one instance, and that instance is accessible to all other objects which require that instance. So there has to be a global point of access for that one single instance. So in cases where there is a requirement of one single instance and we do not want to create multiple duplicate instances, so there we go for a singleton pattern. And see, a global variable would make this object accessible. Now, but it doesn't keep you from इंस्टेंशिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. तो उस केस में भी अगर ग्लोबल वेरिएबल रख भी लें हम, तो भी हमारे मल्टीपल इंस्टेंसेस बनते जाएंगे ऑब्जेक्ट के, तो विच वी डोंट वांट. वी वांट टू इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट ओनली वंस. So the idea of a global variable is also not preferred or agreed upon. Okay, so the objective is to have only one single instance and make it globally accessible to all other objects. So what is the solution? We could have gone for a global variable, but then it will create multiple instances. Now the better solution is to make the class itself responsible for keeping us track of its whole instance. Class अपने आप ही एक instance create करेगी, and it will keep a track of its instance and provide a reference to those objects which require that instance. So class will ensure that no other instance is created. Okay. So whenever there is a request for creating new objects, it will not create object but provide access to the already created instance. So this is the singleton pattern. It's a simple, very simple pattern. It is used in places, or it is used in those situations where we do not want to create multiple objects or instantiate multiple objects of the same class, but we want to have, because of reasons of wastage of resources, one single object and a global access to that object. That is the purpose of the singleton object basically. Is that okay? Yes? Yes, ma'am. So let's move further. Now, how the singleton pattern works? So there is only a single method. Singleton pattern में क्या है? एक single method है. So there is a special method, a single method which is used to instantiate the desired object. And this is the founding principle, or this is the basis for the singleton method, how it is able to instantiate one single object only. And what is interesting about this special method is that whenever this method is called, it checks to see whether the object has already been instantiated. If it has, the method just returns a reference to the object. Okay? So it will not create an object. So now the sole responsibility of the object instantiation is the of the class. So, and how it handles it? It handles, the class handles through a special method that is used to instantiate the
desired object. So if it is already instantiated, it will just return a reference to the object. If suppose the object has not been instantiated, the method instantiated and returns a reference to the new instance. So this method keeps a check that not multiple instances of the object are instantiated. Only a single instance as object is instantiated only single time. Okay. So to ensure that this is the only way to instantiate object is desired, now what we do is we define the constructor of this class to be protected or private. Okay, to make sure that we can instantiate the object solely through the class itself. So we will make the constructor instead of public, protected or private. So what is the essence of the singleton pattern? So the essence of the singleton pattern is that every object in the application uses the same instance of the singleton. So we do not have to be responsible for passing the instance around all the objects that want to use it. So, okay, the reference is just passed and whoever requires it will use it. Now, let us apply the concept of singleton pattern to the earlier case study where we were applied the strategy pattern to encapsulate the different tax calculation laws for the different countries. So, you remember that we encapsulated the tax laws in one class called strategy called CalcTax, and then we have derived classes according to the countries. All right. So, now here what we want is, see, now here the singleton pattern comes into existence. See, हमारे strategies में क्या था कि हमारे strategies में we had when if you remember the strategy pattern, when I had talked about the strategy pattern, we had encapsulated the variations. That is, what was the variations? The different tax laws for different countries. और फिर हमने derived classes बना दी थी countries की, और according to the class the tax law was used, or that particular algorithm was used according to the country. So here also multiple object instances would be created. So now what we are trying to do is that we will instantiate the tax calculator strategy only once and whenever it is needed. So here we will apply the singleton pattern in case of our tax strategy pattern. जो हमने स्ट्रैटेजी पैटर्न में क्या किया था कि हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विल बी इंस्टेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द country for which the law is to be, or the tax calculation rule is to be used. So now we will try to solve the same thing using a singleton pattern where we will instantiate the tax calculation strategy once and only once and whenever it is needed. Now, so try to understand this. See, in the strategy pattern, we encapsulated the rules about taxes within the strategy objects. Okay, and there was a derived calc tax for each possible tax calculation rule. Different countries की different derived classes थी calc tax class के साथ. So what it means is that we need to use the same objects over and over again, just alternating between their reasons, between their uses. So अगर US का करना है तो आप एक instantiate करोगे object which will be using the calculation of tax rules for US. Canada का है तो अलग होगा. So what is it that we are keeping on instantiating multiple objects and throwing them after use? यही हम कर रहे हैं ना स्ट्रैटेजी पैटर्न में. सिर्फ हम उसमें ये फायदा कर रहे हैं कि जो वेरिएशन है उसको इनकैप्सुलेट कर दिया, लेकिन यहाँ भी हमको मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे कंट्री के हिसाब से. तो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट किया अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कंट्री, उसको यूज किया, फिर उसको थ्रो अवे किया, फिर दूसरी कंट्री का टैक्स लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया और वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया, फिर थ्रो अवे किया. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बेसिकली कीपिंग ऑन इंस्टेंशिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, throwing them again and again and again. Now this is not a good approach, you know. So it's a, now another thing is we could also instantiate all the possible strategies at the start. Now this could become inefficient if the number of strategies grew large. क्या मतलब है इसका कि अब आपकी प्रॉब्लम में है, हमने जो स्ट्रैटेजी पैटर्न लगाया था कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लॉस. नाउ देयर कुड बी अनदर प्लेस वेयर यू वुड अप्लाई द स्ट्रैटेजी पैटर्न वेयर देयर वुड बी अ वेरिएशन. सो a number of strategy patterns in one application could be more than one. If there are requirements which are having
वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे रूल्स हैं, बिजनेस रूल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, तो सपोज ABCD एल्गोरिथम्स वी वांट टू एनकैप्सुलेट सपोज in different places. So there is a possibility that in one object oriented design you might have to apply strategy pattern more than once, depending upon the nature of the rules which you are going to encapsulate in the strategy pattern. So it is not advisable also to instantiate all the possible strategies and one go in the beginning, because there could be multiple strategies throughout our application. So what is best is that we instantiate the strategy as and when needed, and we instantiate it only once. तो ये सब जो है गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं. स्ट्रैटेजी को इंस्टेंशिएट किया जब उसकी जरूरत है और एक ही बार. तो ये नहीं कि हम मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे फॉर बिजनेस रूल्स. वी विल इंस्टेंशिएट दैट ऑब्जेक्ट ओनली वंस. So that is how it is achieved through the singleton pattern. We instantiate the strategies once and whenever they are needed. So what is the problem is that we do not want to create a separate object to keep a track of what we have already instantiated. So what we like is that objects themselves, that is the strategies, they are responsible for handling their own single instance. तो हम हर strategy को अपना single instance instantiate करने के लिए responsible बना देते हैं. So if you remember in the beginning we said that one of the mandates of object oriented design is to make the objects or classes responsible for their behavior, because we want to delegate the responsibility. We do not want to saddle one object or one class with all the work or all the responsibility of instantiating. So instead of creating a separate object which will keep track of what we have instantiated, what we will do is that we will keep the strategy responsible for its instantiation, and instantiation only once. So singleton makes objects responsible for themselves. Now this is the purpose of the singleton pattern. It enables to instantiate an object only once, okay, without requiring the client objects to be concerned with whether it already exists. That is the purpose of the singleton pattern. So what are the key features of the singleton pattern? First of all, intent, as we have already said, that we want to have only one of an object. किसी भी class का strategy का, we just want to have one object, and there should be no global object that controls the instantiation of this object. Now, we also want to ensure that all entities are using the same instance of this object without passing a reference to all of them. So, now what is the problem is actually the several different client objects will need to refer to the same thing, and we want to ensure that you do not have more than one of them. So, everyone will only instantiate only once. So, we have to guarantee only one instance for the reason that we want to improve the performance. ये नहीं कि जब किसी को चाहिए क्लाइंट को, it will instantiate one version of the strategy pattern, use it and throw it, then again use it and throw it. And in case of multiple strategies in one object oriented design, it will be just a process of using the objects, instantiating objects, throwing, instantiating objects, throwing. So that is not, that hinders the performance. So what is the approach, better approach to improve performances, that make the strategy responsible for instantiation of one single object, and that too when needed, and use it and make it available to all other objects which want to refer it or to use it. That is what is the purpose of the singleton pattern. So what are the participants and collaborators in this pattern? There is a client that creates an instance of the singleton slowly through the get instance method. So this is the special method. This get instance method is a special method which takes care of the fact, which is there in the singleton, which takes care of the fact that only one single instance of the strategy is created. Okay. So what are the consequences of having this single method? That the client will need not concern themselves whether an instance of the singleton exists or not. So everything is controlled within the singleton now. So this pattern itself or this class itself will control everything about instantiation of the object, and avoiding the instantiation of multiple objects. So how it is implemented? It is implemented by adding a private static member of the class that refers to the desired object.
and add a public static method that instantiates this class if this member is null, and then returns the value of this number. And also we set the constructor status to be protected or private so that no one can directly instantiate this class and bypass the static constructor mechanism. So we will not give leverage to anybody to create this class. The instantiation of the object solely lies with the class itself. And through the get instance method, it will make sure that it will just create once. If and it will pass anybody else asking for it, will pass the reference to that object. So this is the generic structure of the singleton method. It will just return the instance, whoever is asking for uh, the class. So instead of creating multiple instances, it will just make sure that one single instance that has been created, that is referred by everybody globally, global access to all. So that is the get instance method here. So this is the singleton pattern for making sure that one single instance of a strategy is created, and that too once, and this is just for improving the performance. Is that clear? Yes. The singleton method. Yes, Okay. ma'am. So this, how many patterns we have done? Around 7 कितने कर लिए अभी हमने? Anybody remembers? I don't remember. We have done adapter, we have done abstract, we have done decorator, we have done observer. Then what else we did? I don't remember. और कौन से करें? एक सिंगलटन, हाँ, स्ट्रैटेजी कर लिया, 6 हो गए और 6 पैटर्न्स हो गए. तो अगली बार अब एक दो और पैटर्न्स कर लेंगे. तो पैटर्न्स तो ऐसे आप पढ़ते जाओगे, ठीक है ना. अब नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड, और यू मस्ट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड that what is required is implementation. That is why I am laying stress कि आप एक केस स्टडी पकड़ो और केस स्टडी का आप अच्छे से राइटअप बनाओ, तो और उसके बाद आप वहाँ पे इसको अप्लाई करो, because it is more of a practical oriented subject rather than reading in theory. Now we know all the concepts. अब हमें पैटर्न समझ आ गया, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स भी समझ आ गए, हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा पैटर्न किस सिचुएशन में अप्लाई होना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू ऑल शुड टीम अप in whatever groups of 2s or 3s, and you should take up one case study, a real life case study, where you should deliberately you should write the requirements or the problem statement in such a way that you make scope for changing requirements at different places or variations, you know, because the places of variations are the places where you will fit in the patterns. So उस तरीके के आप पूरा, इसलिए मैंने कुछ, मुझे I don't know it is in this group or another group, some of the students had just listed their group name and they had just given me the title of the case study. So that is not right, you know. You have to give a detailed account. You have to identify places where you will be applying the patterns. Then you have to apply those patterns, you know, and then finally that is what your design becomes. So मैम 1 अक्टूबर तक तो केवल हमें टीम कंपोजिशन और वो देना था ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आपने कहा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मानवी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिटेल में देनी है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपका क्या ही मतलब. मुझे आपको भी अब समझ आ रहा होगा, जब तक हम पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, केस स्टडी नहीं लिखेंगे, हमें एक्चुअली पैटर्न्स को सीखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कौन से पैटर्न्स लगाने हैं, क्योंकि हर पैटर्न की अपनी अपनी एक इंटेंट है, वो तो हमने देख लिया है. तो इसलिए हम जो है इंटेंट से स्टार्ट करते हैं. हर पैटर्न कोई ना कोई वेरिएशंस को हैंडल कर रहा है और डिफरेंटली हैंडल कर रहा है, तो वो हमें समझना है. तो उसको समझने से फिर आपको ये पूरा कोर्स जो है इसकी कुछ वैल्यू है. हमने डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ लिए, तो जो इसको होलिस्टिक व्यू आपको तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर एक रियल लाइफ केस स्टडी लोगे. उसमें आप फिर आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ, मुझे यहाँ पे ये पैटर्न लग सकता है तो मेरा डिज़ाइन अच्छा बन सकता है, क्योंकि ये वेरिएशंस को मैं इस तरीके से या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इनकैप्सुलेट. सो आइडिया इज टू apply the design patterns in a real life case study. So now what I want is, so I have returned that this thing also to some of the students who had just posted their name of the team and the problem statement की सिर्फ title दिए, नहीं, पूरा आपने 1-2 पेज का डिटेल स्टडी देना है
और फिर उसके बाद मैम डिटेल स्टडी में बेसिकली हमें वो देना है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना और कहाँ का हाँ रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। हाँ और बाकी जो डिजाइन पैटर्न्स और कोड है वो हमें अक्टूबर 10 तक देना है हाँ ना? राइट राइट राइट, दैट इज ठीक ट्रू। है। क्योंकि उसके बाद फिर मैं चाहती हूँ कि आपके पास एक बार अपना ब्लूप्रिंट आ जाएगा, फिर आप सोचना शुरू करो। हमने जितना पढ़ लिया और थोड़े बहुत और पैटर्न्स भी तब तक पढ़ लेंगे हम और भी, लेकिन इसी तरीके से आप देखोगे कि पैटर्न्स में एक कॉमन बिहेवियर है। now because see now you should be able to grasp the common thread in the patterns because you know the basis of patterns. So hum ye different patterns, this is just like reading different programming languages but the paradigm is object orientation only. तो मैं आपको ऐसे different patterns बताती जाऊंगी और कुछ आप अपने आप से भी बुक से देख लो। तो लेकिन now because now you have the foundation that why patterns are used and how patterns are used, so you should be able to understand any other pattern also which suppose I don't discuss in the class also, because now you have the founding principles. This is similarly like if we understand the object oriented concepts and we learn one language, we can learn any other language. This is similar like this, because design patterns are so widespread in all the domains, you know. They are in testing also, they are in cloud architecture also, they are in data science also, and they are in software design also. So we cannot learn all the patterns, you know. हम सारे पैटर्न्स तो याद कर भी नहीं पाएंगे और हम सारे, लेकिन हम अब आपको, क्योंकि अब आपने कोर्स पढ़ लिया, अब आपको समझ आ जाएगा कि पैटर्न अगर कोई लगा रहा है तो इसका मतलब वहाँ कोई वेरिएशंस है जिसको वो कैप्चर कर रहा है, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोड को अकोमोडेट कर रहा है इन फॉर फ्यूचर, ताकि अगर कभी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो तो आपको बाकी कोड को टच ना करके सिर्फ उतने आइसोलेटेड पोर्शन को टच करना है। क्योंकि हम ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको अब आई हैव गिवन यू द बेसिक कंसेप्चुअल फाउंडेशन अबाउट द पैटर्न्स। सो आई विल बी कीपिंग ऑन डिस्कसिंग, ऐसे ही मैं अब क्लास लेस्ट ऑफ द लेक्चर्स में आप एक एक करके पैटर्न डिस्कस करती जाऊंगी। तो लेकिन द यू विल ओनली ग्रास्प द सब्जेक्ट जब आप एक पूरा प्रोजेक्ट लेके और उसको इंटायरिटी में पैटर्न्स लगाओगे, फिर आपको यू विल अप्रिशिएट द पैटर्न्स, यू नो। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस कोर्स, यू नो। First was making the foundation for the relevance of patterns in computer science. So that we have done it very nicely. We have understood the concept that why patterns are used and how patterns are used. Now I am taking different patterns. और मैं हर पैटर्न की किस सिचुएशन में वो लगता है और वो कैसे लगता है, वो मैं हर क्लास में एक एक पैटर्न लेती जाऊंगी। So the initial lectures were therefore very important because they were the base building lectures. Now with that knowledge, you can proceed into any domain where patterns are used and you will understand them. Because now you have the basic founding knowledge of the relevance and applicability of patterns in computer science. So this is all in gist about the course, you know. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक तो रिसर्च प्रॉब्लम तो मेरे देखो, हमने 2 मेजर असाइनमेंट्स सेमेस्टर में हमारा मेरा टारगेट रहा है। एक तो ये रहा ये वाला ये पैटर्न्स का जो मैं आप 1 अक्टूबर को दोगे केस स्टडी का, ये है कोर्स रिलेटेड, ठीक है ना। दिस असाइनमेंट इज सिलेबस रिलेटेड बिकॉज दिस इज गिविंग यू अ होलिस्टिक व्यू ऑफ वॉट एवर वी आर लर्निंग इन द क्लास. Now the second term assignment or the long assignment or the semester assignment which I have given is a research assignment. Now that has got a different perspective. That is for those students or for those students who are interested in writing a research paper, you know. Now having a founding knowledge of these patterns, some of you might be interested to go into more depth, you know, learn about the applications of patterns or whatever applications of patterns in some specific domain, or the core pattern area, the core design patterns, how they are designed, and the domain of the core patterns. So that assignment is meant for, that is more of a thought provoking and a mind exercise, you know, for those of you who want to do something extra, apart from the syllabus curriculum. So syllabus curriculum तो हमारा जो है first assignment will take care of it. That is the project where you will have a case study, you will apply those patterns and you will make an object oriented design. So that is it. Second assignment is something extra. So this is for those who want to delve into more details and who find it interesting and who are interested in printing and publishing a research paper for future studies. So वो scope उनके लिए है. तो वो
वही लोग टच करें उसको जो कि रियली इंटरेस्टेड हैं और दे हैव इन माइंड दैट बिकॉज इफ यू विल ट्राई यू विल एंड अप इन यू विल डेफिनेटली प्रिपेयर अ रिसर्च पेपर, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. अगर आप क्योंकि मेहनत करेंगे तो आई विल गिव यू गाइडेंस एंड वी विल डेफिनेटली कम आउट विद अ रिसर्च पेपर. सो दैट एक्स्ट्रा माइल इज फॉर दोज हु वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. So ये इस तरीके से मैंने इस कोर्स को I have therefore divided into these two long assignments. I have divided according to these two perspectives. One is subject oriented and one is research oriented. Is that all right? Am I clear to everybody? Yes, ma'am. ठीक है ना. तो आप इसको ऐसा ही लीजिएगा और इस तरीके से I want the outputs in this fashion. You know, I want the deliverables in this way for both the assignments I have told you. उसमें मुझे किस तरीके का डिलीवरेबल चाहिए क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है दोनों असाइनमेंट्स का डिफरेंट है. ठीक है. फिर तो आप वो तो आप केस स्टडी अच्छे से बनाइए, उसको डालिए, फिर उसके बाद यू स्टार्ट अप्लाइंग द पैटर्न्स एंड बाय 10th of October then we will have the ready designs. And those who are interested in research papers, they can take my guidance. I am always ready, but you should be really serious. And if you want, we can always publish a good research paper in some good journal, you know. So that's the interest of some of the students who want to do something more than the course, you know, the syllabus. Okay, so now what I'll do is I'll just post a quick assignment. So the flow of the course is going quite fine. I'm quite happy with it. बीच बीच में आपको मैं assignments short भी दे रही हूँ और ये तो long projects आपको दे दिए, तो I'm quite happy with the flow of this thing. अब टेस्ट वगैरह एक तो हमने कर लिया है, उसके मार्क्स वो नेगेटिव मार्किंग वगैरह कैलकुलेट करके आपको देना है. एंड आई डोंट नो व्हेन दे विल गिव द शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. अदरवाइज विद द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्स यू नो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. सो इस तरीके से मैं बाकी टाइम जो है एक पैटर्न लेती जाऊंगी और आप ये असाइनमेंट करके वी विल डिस्कस आल्सो असाइनमेंट. इफ यू वांट वी कैन डिस्कस आल्सो लेटर ऑन. मैम उन क्वेश्चंस का क्या हुआ? वो जो एक क्वेश्चन में डाउट था, वो 7th और 11th दो क्वेश्चन जो 7th और 11th है ना. यस मैम. तो उसका मैं फिर आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि 11th तो देखो वो तो हो गया मिस्टेक से, क्योंकि मुझे मैंने ऑन द फ्लाई उसको चेंज किया था एंड मे बी इट हैज नॉट एक्सेप्टेड इट. एंड आई थिंक 7th इज आंसर या गलती से मुझसे वो हो गया. तो आई थिंक आई विल बी गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर 7th and 11th to all of you. Thank you, ma'am. Okay, so that's it. Now I'll post a quick this thing attendance for today. Today is what date? 27th? 29th, ma'am. अच्छा 29th हो गई. अच्छा मैं 27th पर अटकी हूँ. That's it. अटेंडेंस आप लोगों की मैं ऑफ एंड ऑन करती रहूंगी क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता, बहुत काम है. तो बीच बीच में मैं कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हो कि ये फाइनल है, हो सकता है वो मैंने डेज अभी टच भी ना करे हों, तो इसलिए एकदम से पैनिक मत हो जाओ. तो जब मैं पूरा कर लूंगी हो सकता है मैं उस दिन क्लास में डिक्लेयर भी कर दूंगी कि मैंने सितंबर की पूरी कर दी है, अब आप लोग चेक कर लो. तो अभी मैं खुद ही डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैंने करी ही नहीं है. मेरे कुछ अभी पेंडिंग है. जो भी मैं आपसे अटेंडेंस ले रही हूँ वो मैं एंटर कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट्स, यू नो. A lot of administrative jobs also I have, so time constraint के कारण हो नहीं पाता वो. आपने असाइनमेंट पोस्ट कर दिया क्या? कौन सा वाला? अटेंडेंस का. अभी कर रही हूँ ना, मैं करी तो रही हूँ, लिखी तो रही हूँ, साथ साथ उनसे बात कर रही हूँ, साथ साथ लिख रही हूँ, साथ साथ असाइनमेंट बना रही हूँ, साथ साथ लिख रही हूँ. और ये मैंने पोस्ट कर दिया. ठीक है, अब मिल गया होगा आप लोगों को. ठीक है, मैं मीटिंग से एग्जिट कर रही हूँ. ओके ओके, बाय.